good morning everyone. I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak Civil Services, where we are going to start with our session of current affairs. As you all are very well aware about a lot of things. So let me just brief you about what this session will hold. This class starts sharp at 10 a.m. and comprises of 10 amazing news headlines. So news headlines would be the portion that will be dealing with the current affairs, along with which we will be sharing 10 plus points with every news headline. So this class will be giving you an outlook of approximately 100 topics today, right? So let's begin our session. I will try to cover almost 10 points each, and but today we will start from 5 each, right? 5 topics, 5 pointers from one news headlines in addition to what we are studying, and soon by according to the time we will increase the number. As we have the limitation, we have to wind this session up in 1 hour, right? Okay, so we have to just first subscribe to Samyak Civil Services YouTube channel and Samyak Civil Services in English for further class updates and class notifications and an important news sessions that comprises of all your targets all your examinations, right? Okay, so with this guys, I would like to begin our session. आज की जो पहली न्यूज हेडलाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग अबाउट टुडेज सेशन. In today's class, Rajasthan current affairs has been targeted to the utmost level. हमारे पास में राजस्थान के लेवल पे, राजस्थान के अगर रेफरेंस की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस है विच कंप्राइजेस ऑफ स्कीम्स टू. स्कीम्स भी हैं जो राजस्थान में टारगेट की गई हैं. आपके एनवायरमेंट डे था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन द 5th जून, तो उस दिन आपके क्या इनिशिएटिव्स राजस्थान के अंदर लिए गए, ऑल दोज विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन. सो लेट्स बिगिन विद दैट गाइस. या So first news headlines is UN approves Turkey's request to change name to Turkey. भैया तुर्की की क्या बात हो रही है यहाँ पे? So we all can observe that nowadays people are more focused on their native language. आज अगर हम बात करें आपके टुडेज आज की मतलब सिंपल डे की हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो एक चीज बहुत रेफरेंस में हमें क्लियर है that people nowadays are focused on the native speaking or the actual pronunciation of the languages or actual pronunciation of the names that they hold, right? So we will be targeting this news headline today, which refers to the new name of Turkey. Turkey being a very important country whose map is being shown over here, right? So उस टर्की का नाम चेंज हो रहा है और वो चेंज आपके यूएन ने अप्रूव कर दिया है. यूनाइटेड नेशंस हैज अप्रूव्ड दैट नेम, द चेंज इन द नेम, and now this name has been put to Turkey, right? Turkeye. So this can be a question in the in your examination. क्या question frame हो सकता है? Let's just write the question down. ठीक है, सबसे पहले हम question ही लिख लेते हैं इस current affairs का. That which of the following country has recently changed its name to its actual pronunciation, and the options can be Italy, India, Japan, Turkey. So what you all will be doing, you will be clicking on Turkey, as the Turkey name has been updated to Turkey, right? This is the news headline that you need to focus on. Okay, chaliye. So let's move ahead with this description. Okay. एक पर्टिकुलर चीज और हमें पता होनी चाहिए तुर्की के रेफरेंस में या टर्की के रेफरेंस में, दैट वी नीड टू नो द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद इट. सो यू नीड टू नो द कैपिटल व्हिच इज रेफर्ड ओवर हियर, Ankara. So the request was raised from Ankara only. Let's understand what this was. The United Nations has changed the Republic of Turkey's country name to the organization from Turkey to Turkey following a request from Ankara for the change. Ankara is the capital of Turkey, from where the request of this change in name was brought up.
UN spokesman Stephen Dujarric had been received the Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu addressed to Secretary General Antonio Guterres requesting the use of Turkey instead of Turkey for all affairs. तो ये भी चीज एक आपकी मेंशन करी गई, be it any affair that targets or concerns the Turkey, now we will be using the Turkey word instead of Turkey. So is that clear? Okay. Moving ahead, guys, what we have to understand is the move internationally recognized official name in English to Turkey in December after Turkish president. Now, Turkish president is also referred over here, and we all can see that now the international presidents and prime ministers and the official positions have been asked in the examination. This is why I always mark all these points. Like, you need to keep in mind all the foreign ministers, foreign affairs ministers, the prime ministers, the presidents of the countries, the representatives of those countries, because they usually come in the examination. And in the RAS 2021 examination, there was a question targeting the international position only. So you need to keep all that in mind. Moving ahead, what he did, he released a memorandum and asked the public to use Turkey to describe the country in every language, not just English, as the English word is Turkey. So he requested everyone that in every language, be it Turkey's original language or be it any language, we will be using the word Turkey in reference to the Turkey being a country, right? Okay. Moving ahead, guys, if we have to discuss more, it is the best representation and expression of the Turkish people's culture, civilization and values. And its capital is Ankara. The president is Recep Tayyip. And the Turkey currency is Turkish lira. It is also very important. So these questions can be asked out of it, right? Okay. So now let's just mark all the questions, right? अभी अब जो questions मैं आपसे पूछने वाली हूँ, those questions will be very, very important for your examinations perspective. They will be targeting the current affairs, right? With reference to the country's name. Sir, I cannot see the comments. Please, can you look after it? जी. जी. तो अभी आपसे जो क्वेश्चंस मैं कंप्राइज करने वाली हूं, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट आपकी डीलिंग्स आएंगी जो आपकी अभी न्यूज में देखने को हमें मिली हैं, ठीक है? चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंट्री, राइट? देयर वाज दिस कंट्री हु एक्सेप्टेड द भीम यूपीआई पेमेंट्स. ऐसी कौन सी अभी कंट्री न्यूज में रही है हु एक्सेप्टेड द भीम यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर्स? तो ये क्या है, ये कंट्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगी? बिकॉज इसमें एक पॉइंट हमें मेंशन किया गया था दैट टू बूस्ट द टूरिज्म एक्टिविटीज एज वेल एज द ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया. As Beam UPI is in reference with the India, so India के साथ में ट्रेड रिलेशंस और टूरिज्म दोनों को एनहांस करने के लिए उस कंट्री ने भीम यूपीआई पेमेंट्स आपके एक्सेप्ट करना शुरू किया है. सो यू नीड टू नेम द कंट्री डाउन, राइट? This is the reference, this is the question with reference to the country, and you need to mark this as a very important topic, right? Okay. Second question that comprises of your countries with reference to the countries, I need to ask you, आप लोगों को पता है नासा का एक लॉन्चिंग साइट की बात हम अक्सर करते हैं, राइट? सो विद रेफरेंस टू नासा's लॉन्चिंग साइट, नासा लॉन्चिंग साइट नॉर्थ अमेरिका, what is the specific place known as? तो आप इसका भी आंसर मुझे देंगे, राइट? यस, क्या बात है, क्या बात है. कोई बात नहीं कुलदीप, इट्स ओके. हाँ जी, नाउ आई कैन सी द कमेंट्स. यस. सो द अबव क्वेश्चन मार्क्स द आंसर एज व्हाट? इट इज द भूटान. इट इज द भूटान. और यहां मैं किसकी बात कर रही हूं दूसरे क्वेश्चन में? That this is the launching site of NASA situated in the North America. So what is this particular place known as? So this is also very important. Can anyone tell me the answer through the comment section? I would like to know it. कोई comments के through answer बताना चाहेगा? Yes. हाँ जी. आपके जो comments आएंगे उन्हीं को देख के मैं आंसर बताऊंगी कि हाँ आप लोगों के आंसर सही है या नहीं है. ठीक है? Yes. हाँ, सिंगापुर कहां से हो गया भैया?
यहाँ बात हो रही है नासा के लॉन्चिंग स्टेशन जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, उसमें लोकेटेड है. सो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? यस, changed or only got approved? It got approved from the UN, so it will be changed soon. Got very nice question, Peshal. Although it is अभी हमने समझ गई हूँ. हाँ जी. रेफरेंस आपका इसमें किससे आ रहा है? चेंज हुआ नहीं है, लेकिन यूएन ने अप्रूव कर दिया है और टर्की प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर चुके हैं. तो ऑलमोस्ट ये चेंज ही है. ऑफिशियली अब ये डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा कि इसको एक्सेप्ट कर लिया है. एब्सोल्युटली ट्रू पेशल, एब्सोल्युटली ट्रू वंदना जी, हर्षिता जी, वेरी नाइस. अजय, वेरी गुड मॉर्निंग. यस, दिस इज केप कैनावरल. केप कैनावरल ऑफ फ्लोरिडा. एब्सोल्युटली करेक्ट. Absolutely correct. Okay, very nice. Nice, very nice. Yes, absolutely true, Peshal, absolutely true. Okay, chaliye. Next question that comprises of question number 3, which is around the world news headlines. तो question number 3 की बात हम करते हैं. around the world में अगर हम बात करें, to assist if we talk about the education system in the northeast. Listen to the question again. To assist for the education scenario or education system in northeast, which international organization funded the program? Got the question? यहाँ पे क्वेश्चन किसकी बात हो रही है? रेफरेंस आपका यहाँ रेफरेंस आ रहा है कि भैया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली टू प्रमोट द एजुकेशन सिस्टम, to enhance the education system, one international organization has referred a financial assistance. Which financial organization are we talking of right now? Yes, now the comments are visible. G Murlidhar ji. Yes. Is this the Asian Development Bank or is this the World Bank? What do you think is the correct answer? हाँ जी. Yes. करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. रिसेंटली देखा गया था कि आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के अंदर एक इनिशिएटिव ये भी था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से. तो मैंने पूछा है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी जिसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है? यस, इट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक व्हिच हैज हेल्प्ड इन प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस. ठीक है, तो इसे ये भी कहा गया है कि भैया अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं हो तो काफी सारे आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रुक जाएं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, यस एब्सोल्युटली पेशल करेक्ट आंसर है. हर्षिता करेक्ट आंसर है. प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, हु इज कंसिडर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए लर्नर्स को, है ना, वरना ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि मैम ये क्या हो गया, हम तो आगे चलते गए पीछे का रास्ता भूलते चले गए. यस, हु इज कंसिडर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? क्या हो गया? हर्षिता, सूर्या, पेशल, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? इसाक हर्जोग राजस्थान में एग्जैक्टली इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही सपोर्ट किया है. एब्सोल्युटली. एंड इसाक हर्जोग इज बीइंग रेफर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल. तो फिर भैया प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है?
Who is considered to be the prime minister of this particular region? Absolutely patient. I can see your comments on both the channels. Yes. ये जो क्लास है ये दोनों ही चैनल्स पे स्ट्रीम हो रही है. इट इज स्ट्रीमिंग ऑन दी सिविल सर्विसेज, सम्यक सिविल सर्विसेज एज वेल एज दी सम्यक सिविल सर्विसेज इंग्लिश, राइट? हाँ. प्राइम मिनिस्टर कौन है फिर? हु इज द प्राइम मिनिस्टर? Naftali Bennett. Absolutely true. And before Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu was holding this position. So Naftali Bennett and Isaac Herzog is the correct answer for these questions, right? तो इस तरह से अगर आपका रिवीजन हो चलेगा आप लोगों को, इस तरह से अगर रिवीजन हो तो चलेगा आप लोगों को. दैट वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस डिस्कस करंट अफेयर्स एज वेल इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि क्वेश्चंस आपके टाइप्ड हो और यस रेस्ट. ये इस तरह से अगर क्लास मूव करे तो ये हेल्प करेगा आपको. चलो, नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन एसोसिएटेड विद द एयर फोर्स. नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन एसोसिएटेड विद द इंडियन एयर फोर्स. So a heritage center to showcase the role of the Indian Air Force in the various wars and its overall functioning will come up at Chandigarh. So Chandigarh can be referred to the place जहां पर आपका अभी Air Force Station का Air Force का heritage center आएगा, right? अभी एयर फोर्स का जो हेरिटेज सेंटर है ये क्या बताएगा आपको? प्रीवियसली कंडक्टेड आपके जो जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए हैं, आपके अपकमिंग वॉर्स में स्टेटसेस क्या रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, ऑल दीज विल बी कंप्राइज्ड इन दिस पर्टिकुलर एयर फोर्स सेंटर, हेरिटेज सेंटर व्हिच इज नाउ बीइंग डेवलप्ड इन द चंडीगढ़. तो इस न्यूज का क्वेश्चन आपका कैसे फॉर्म हो सकता है? हेरिटेज सेंटर of Indian Air Force is being developed in which of the following places? A can be Bangalore, B can be Hyderabad, C can be Kolkata, and D can be Chandigarh. Right? So you will be marking Chandigarh as the correct answer. Right? Yes. Okay. IAF की हिस्ट्री. हर्षिता, उससे इंपॉर्टेंट मैं ये सोचना चाहूंगी कि मैं आपसे ये पूछ लूं कि एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन ज्यादा सही नहीं है? एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताएगा कोई मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. व्हेन डू वी सेलिब्रेट द एयरफोर्स डे? यस, हाँ जी. Answers in the comment section rather than the history of the Indian Air Force. When do we celebrate the Air Force Day? Which day we celebrate the Air Force Day? Yes. हाँ जी. बताइए बताइए. 8th of October. Okay, great. And when do we celebrate the Navy Day? 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे हो गया. नेवी डे कब मनाते हैं? यस. व्हेन डू वी सेलिब्रेट द नेवी डे? क्योंकि ये तीनों डेज इंपॉर्टेंट हैं. एयरफोर्स डे, नेवी डे, आर्मी डे. स्टैटिक बट इंपॉर्टेंट. ऑल 3 days कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. व्हेन डू वी सेलिब्रेट द नेवी डे? एयर चीफ मार्शल भी पूछ सकते हैं एयर चीफ मार्शल भी आपसे. बिल्कुल एयर चीफ मार्शल पूछ सकते हैं. यस. व्हेन डू वी सेलिब्रेट द नेवी डे गाइस? नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग. ओके, वी सेलिब्रेट द नेवी डे एब्सोल्युटली स्पेशल ऑन 4th of December. नहीं हर्षिता, अभी दिख रहे हैं मुझे, है ना? यस, नेवी डे ऑन
4 दिसंबर, तो ये अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर में नहीं है। फिर आ गया अपना जनवरी, और आर्मी डे अपना आता है संक्रांत के अगले दिन 15th January, 4th December, 15th January and 8th October. These 3 days are important with reference to the Indian defense services, right? चलिए, recently we have seen, let me just frame the question. Okay, but you guys must be knowing the answer, but ठीक है, revision के लिए तो हम ये पूछ ही सकते हैं. Question: from Kashmir, Jammu and Kashmir, to transfer the perishable goods via air, which airline signed an MOU with the government of Jammu and Kashmir to transfer or to transport the perishable goods? Which airlines signed an MOU with the government of Jammu and Kashmir? Yes, answer in the comment section as soon as possible. Yes, special correct answer. Okay, Kuldeep, yes, absolutely true. 15th of January is considered to be the Army Day. Yes. Yes, nice. Anybody else who would like to answer this question? जिसको ये पता हो कि अभी हाल ही में और क्या हुआ है? Yes. Go Airlines. Okay, okay, okay. Go Airlines. ठीक है. Correct answer. Recently, Avni Chaturvedi was seen in news. Avni Chaturvedi was seen in news. क्यों न्यूज में थी अवनी चतुर्वेदी? ऐसा क्या फर्स्ट विमेन ऑफ इंडिया की लिस्ट में इन्होंने ऐड किया है कि न्यूज में थी? फर्स्ट विमेन ऑफ इंडिया की बात इन्होंने क्या की है? हाँ जी, सूर्या क्वेश्चन तो पूछने दो. ओके, पूछ लिया. सूर्या एकदम परफेक्ट है, इनको पता है कि मेरा माइंडसेट कहाँ जाएगा, है ना? क्या बात है सूर्या, वेरी नाइस. बट पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए. अवनी चतुर्वेदी जी अभी न्यूज में देखी गई, अभी की जस्ट रिसेंट बात नहीं कर रही हूँ, बट न्यूज में वो क्यों देखी गई? उन्होंने इंडियन विमेन्स फर्स्ट विमेन्स लिस्ट में कौन सी जगह टाइटल अचीव किया है? टू फ्लाई द फाइटर प्लेन. She became the first women fighter pilot of India, right? हाँ जी, रफेल फ्लाई किया था इन्होंने, और ये फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट आपकी इंडिया की बन गई हैं. एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि कश्मीर न्यूज में देखा हमने, तो सूर्या का एक क्वेश्चन रेफरेंस बिल्कुल सही आया है. फ्लोटिंग एटीएम, फ्लोटिंग एटीएम on Dal Lake of which bank? किस बैंक का फ्लोटिंग एटीएम है डल लेक के ऊपर? सो इट इज दी none other than SBI. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? SBI की बात हो रही है. चलो, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलो, हाँ जी, ठीक है जी. अगली न्यूज हेडलाइन देखते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच कैन बी ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. तो देखो, फाइटर प्लेन्स और इनके जितने भी फाइटर्स आपके पायलट्स न्यूज में रहते हैं, इन सबको कंसिडर करते हुए हम आपकी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं. ठीक है, डल लेक, SBI, एब्सोल्युटली. प्रद्युमन करेक्ट, हर्षदा करेक्ट, कुलदीप करेक्ट. अच्छा, तो कुलदीप काफी टाइम हो गया ना क्लासेस को लिए हुए. चलो, एयर चीफ मार्शल के बारे में अगर आपसे पूछे तो VR चौधरी जी आप नाम याद रखेंगे, विच इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज द एयर मार्शल्स और द इफ वी टॉक अबाउट द नेवी मार्शल्स आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन समटाइम्स, राइट? यस गरिमा, करेक्ट. चलिए, next, Indian Air Force was founded on 8th of October. Indian Force headquarters, Air Force headquarters are in New Delhi. And if you talk about the chief, then it is none other than Vivek Ram Chaudhary, which was also seen in news as he was recruited.
right? When he was recruited, he was seen in news. चलो नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन भैया आ गया है भारत का राजस्थान, for which we are preparing in a very depth, or we are preparing it in in-depth manner. So from Rajasthan, this news is very, very important and is considered of one of the great abhiyan, right? So you can refer to Rajasthan Special Healthcare Abhiyan launched for pregnant women was named as Anchal, right? Hanji. Aisha Aziz was also in news. Hanji. बहुत कम एज में यंगेस्ट एयर पायलट के रेफरेंस में हम उनको आयशा अजीज को याद कर सकते हैं, बिल्कुल आयशा अजीज को हम याद कर सकते हैं। चलिए, नाउ हियर वी आर रेफरिंग टू द राजस्थान स्टेट अभियान. राजस्थान हैज स्टार्टेड दिस आंचल अभियान फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, राइट, टू टेक केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन. दिस अभियान हैज बीन स्टार्टेड. तो आपसे पूछ सकता है, राजस्थान गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड एन अभियान फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, व्हाट which of the following अभियान is being referred over here? तो आप इसमें आंचल कर सकते हैं. कंफ्यूज करने के लिए सुपोषित माँ भी आ सकता है, लाडेसर भी आ सकता है ना. लेकिन आप लोग को करेक्ट आंसर याद रखना है एंड यू विल बी रेफरिंग टू ओनली आंचल, राइट. वो कहते हैं ममता का आंचल, वही रेफरेंस आप यहाँ पे याद रखेंगे. So we can refer to a healthcare abhiyan. Anchal has been launched in the Karoli district for the pregnant women. So this has been started from the Karoli district. आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये न्यूज अपडेट आपका देखा गया है. So with reference to the district we will be referring to what? डिस्ट्रिक्ट के रेफरेंस में हम किसका रेफरेंस यहाँ पे देखेंगे कि करौली को रेफर यहाँ पे किया गया है. Yes, absolutely Surya. Next is this campaign is around like they have diagnosed 13,144 pregnant women, and out of which you will be shocked to notice that 11,202 women were found to be anemic and less hemoglobin was observed in them. तो हेल्थ इश्यूज विमेन में इतने सारे हैं कि 13,144 में से 11,202 महिलाएं ही आपकी जो है अनफिट कैटेगरी के अंदर है. तो बहुत कम महिलाएं हैं जो फिट कैटेगरी में है. ऑल द अदर विमेन आर एनेमिक, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, right? So this is important. More than 13,000 women have been benefited from this particular abhiyan as we have recorded the health concerns of those women, right? Next we have is the women were advised to take the right medicine and necessary nutritious diet. This is also very necessary. अगर आप चाहते हैं कि आप फिट रहें, फाइन रहें, तो एक्सरसाइज के साथ साथ में आपको न्यूट्रिशियस डाइट, नेचुरल डाइट भी लेना बहुत जरूरी है. Right? This unique campaign was started on the initiative of District Director Ankit Kumar Singh to ensure all necessary medical aid to the pregnant women at the time of pre and post-natal stage so that maternal and infant mortality rates could be reduced. So now this was to counter the maternal and infant mortality rates, right? As we can clearly observe that the population of women is nowadays growing, and now it is growing in too much manner that the women will, I guess, override the men's population in some days, right? Next is this campaign, if we talk about, it also ensured that the auxiliary nurse midwife and the ASHA workers in district will keep in constant contact with the pregnant women of their respective areas and provide them with the necessary counseling and the treatment and when required. तो जब भी treatment required होगा, आपकी आशा पे जो nurses हैं वो भी आपकी जो है मदर को assist करेंगी, help करेंगी. Along with them, the assistants or the like midwife of the worker midwives, health workers, they will also be assisting, right? So this is important. Why it is important, guys? क्योंकि health sector से associated जितनी भी news headlines होंगी, they will be playing a major and important role in your examinations. So the next question that comes to our mind is with reference to the Meghalaya, as it wins the Best Project Award at the UN World Summit, and it is an important achievement for the state of Meghalaya as well as the India, as it has achieved an award in the United Nations, and it has paid like almost, if we talk about, a lot of its like contribution of its natural life to achieve this particular award, right? हाँ, yes. चलिए, ठीक है. Let's have a look at this news headline now. Meghalaya government's key initiative is of e-proposal system. E-proposal system का है इनका initiative, in which the part of Meghalaya Enterprises architect has won a coveted UN award
World Summit on the Information Society Forum prize at the Geneva in Switzerland. So Geneva in Switzerland is considered to be a very important region. And if we talk about Secretary General of the ITU, Haolin Zhao, presented the award, winner award to the Chief Minister Konrad K. Sangma in the WSIS format or forum prizes held in the Geneva, Switzerland. तो ये prizes आपके जो हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर दिए गए और इसके अंदर नॉमिनेशन आना ही बहुत बड़ी बात होती है, राइट? Is that clear? Clear है इतना? Yes. Okay, great. ठीक है हर्षिता, सिर्फ आपको समझ आएगा हर्षिता? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन देखते हैं. यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठ. श्रेष्ठ किसके लिए हो सकती है? श्रेष्ठ क्या लगता है किसके लिए हो सकती है? श्रेष्ठ किसके लिए हो सकती है? यस, हाँ जी, श्रेष्ठ का रेफरेंस किससे आएगा? बताओ भाई. Excellence. So now we talk about the Minister of Social Justice and Empowerment, who is Virendra Kumar. He launched the scheme Shresht, and it is very important. Why is this important? All the good materials or all the raw materials which have been formulated or all the education system that has been formulated will be like covered up in this, and now like it will be a better initiative by the government of India. Union Minister has launched the scheme Shresht for residential education and students in the high school in targeted areas. The scheme for the residential education for students in targeted areas has been formulated with the objective to provide quality education and the opportunities for every, even the poorest. Scheduled caste and students as per the constitutional mandate. तो स्टूडेंट्स की जितनी भी आपकी बातें हैं, जितनी भी आपके उनके कन्वेंस पॉइंट्स हैं, वो सब आपके एक मैंडेट के थ्रू रेगुलेट करना, और वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप सब कुछ टाल सकते हैं लेकिन वो नहीं टाल सकते. ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा यश जी, कैसे होता है ये कैसे होता है? So there have been various advantages and disadvantages and generation of lack of educated education. Governmental efforts, if we talk about, it is to spread the education and without the discrimination, save workers with the universal access of the sanitation. तो लोगों ने क्या कहा कि भैया हम लड़कियों को स्कूल तो भेजेंगे, लेकिन इनको अगर यूनिवर्सल एजुकेशन एक्सेस नहीं मिलता है, यूनिवर्सल बेसिक सैनिटेशन एक्सेस नहीं मिलता है, तो कोई सेंस नहीं है. तो आप प्लीज वो प्रोवाइड करिए, फिर ही हम हमारे बच्चों को कहाँ भेज पाएंगे, आपके जो है रेफरेंसेस में भेज पाएंगे. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नोट डाउन. नेक्स्ट वी हैव the Department of New Initiative, where the scheme for providing quality education was also set up, and residential schools to the meritorious students who cannot afford the fee of such schools was also transferred. Yes, next अगर हम देखें तो श्रेष्ठ is very very important. It provides for the higher quality education for the meritorious students, but the poor SC students in the CBSE reputed schools across the country will be receiving the facilities out of it. Right? Yes. नेक्स्ट देखते हैं गाइस, बिकॉज ये बहुत सारी न्यूज हेडलाइंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस आपकी यहाँ पे रेफर की जा रही है. सो हेयर द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रह्म कुमारी संस्थान अंडर द कल्पतरु कैंपेन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भेज रखिए गरिमा काफी सारों की, एक दो की बच्ची है वो भी डलवा दूंगी. ठीक है. Yes. So here we are talking about the Kalpataru campaign. कितने लोग हैं जो आपके कल्प और तरु का मतलब समझते हैं? Yes. Yes. कल्पतरु का मतलब कितने लोग समझते हैं?
बताइए। नो वन? अरे डिस्ट्रिक्ट की पीडीएफ के लिए ओके, कुलदीप आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट की पीडीएफ। Kaltaru can be referred to a tree in which we can see that on Sanatan vision for nature conservation, सनातन धर्म जैसे कि प्रमोट करता है कि हमें नेचर को कंजर्व करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। So to that only they need a based environment protection and friendly policies. So all this will be transferred in the like hands of the nature. Governor Shri Kalraj Mishra has stressed on the formulation of environment-friendly policies based on the Sanatan Indian vision of India, conservation to promote the balanced development. As how much there is the harmful things, there should be the good things too. Right? Next comes the Sarovar campaign, Gyan Sarovar, the Mount Abu, and on the occasion of the World Environment Day on Sunday, we have like contributed to an extent, and we can see that in the content also you are discussing all of this in detail, right? Next news headline is comprised of one amazing topic which will be under the certification. So Clean Center Food Hub. How many of you have been to Jaipur Chowpatty of Mansarovar? How many of you have been to Jaipur Chowpatty Mansarovar? Where they have seen or where they have located one thing, that the garbage use is like the mandatory, right? Also one thing is being referred over here, it has been received the Clean Street Food Hub, right? So this is also very important, okay? क्योंकि वहां पे खाने के साथ साथ में सफाई भी बहुत है, and that is important. चलिए नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक कि अवार्ड किसने दिया है? FSSAI ने दिया है, दैट इज द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग आफ्टर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द नेचर गुड्स एंड एवरीथिंग, राइट? नेक्स्ट इज द हाउसिंग कमिश्नर पवन अरोड़ा. He was also congratulated on the concerned officers and all the shopkeepers of Chowpatty. In this achievement, Mr. Arora informed that the Chief Executive Officer, Mr. Arun Singhal, has given this certificate to the Mansarovar Chowpatty after being found that to be fit in various parameters and benchmarks. This particular place is exciting, right? तो tourism के तौर पे भी इसका बढ़ावा आपका हो रहा है. Next news that comes to our mind is the Niranjan Arya nominated as the International Commissioner. तो अभी निरंजन आर्या जी को थोड़े टाइम के लिए रिटायरमेंट दे दिया था, लाइक ठीक है, थोड़े टाइम के लिए वो नहीं मतलब अगर हम बात करें रिटायरमेंट की बात नहीं करूंगी एग्जैक्टली, बेसिकली उनको डिपार्टमेंट्स चेंज की बात आती है यहाँ पे, है ना? तो जब भी हम डिपार्टमेंट्स चेंज की बात करेंगे, उनको अभी जो डिपार्टमेंट्स दिया है वो कौन सा दिया है? आपके राजस्थान स्टेट चीफ कमिश्नर का दिया है पोजीशन, एंड दैट इज ऑन दी राजस्थान स्टेट भारत स्काउट्स. तो भारत स्काउट्स के अंदर आपको उनकी पोजीशन मिल गई है. सबसे पहले तो हम देख सकते हैं ही वाज द चीफ कमिश्नर ऑफ द राजस्थान, and he is now holding a position in the Indian position. So that is also very important, right? Next that comes is the organization became proud of Shri Arya becoming the international commissioner, which is also very important. So how many of you want to become commissioners one day? How many of you want to become commissioner one day? कितने लोगों को लगता है that being a commissioner is very like a very good job? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो मनोराम जी, मुन्ना राम जी, सही कह रहे हैं आप. वेरी गुड मॉर्निंग भरत वर्मा. चीफ सेक्रेटरी बनना है भरत को, क्या बात है भरत, वेरी नाइस. चलो, PM launches the global initiative that is the lifestyle for the environment, and that is the life movement. This is the life movement which is important for us to note down, and this is the news headlines of yesterday's newspaper only. PIB it was reflecting. Yeah. So Prime Minister Narendra Modi launched a global initiative for the environment. He launched the initiative Life, global call for papers inviting ideas, suggestions from everywhere. The academics, the universities, the research institutions, etc. influence at the persuasion of the individuals, communities and organizations across the world to adopt an environment conscious life. So it is important for us to note down that there are people who are conscious about the environment, and they are very well aware about how like environment is evolved, right?
So whenever we talk about something and someone states about environment, just remember one thing, that please just for me plant a tree every month. That will definitely boost your entire life. So here we're talking about the Prime Minister, as he reminded the gathering that his global initiative was proposed by him on the COP26 last year. He added that the vision of the life is to live a lifestyle that is in tune with our planet and does not harm it. And also, those who live such a lifestyle are called the pro-planet people. So we are not going against the something which is nature, which Mother Nature provides, but we will be respecting that, right? Okay. Next comes the borrows from the past. For the mission, if we talk about mission life, the borrowers were from the past, operators in the present, and the focus is on the future. So reduce, reuse and recycle are the concepts woven into our life. 3 R's which are considered to be very important since you came in the 6th standard. So last news headline, it is associated with what? It is the India-Bangladesh joint military exercise which is being named as Sampriti X. ठीक है, एक्सरसाइज संप्रति एक्स की बात यहाँ पे हो रही है. This will be commencing in the Bangladesh and it is very very important as it will be boosting the relationship between the Bangladesh and the India. So whenever we talk about building up a relationship, you need to sometimes go beyond what you are doing, beyond your comfort zone. So that's what India has done. It has gone beyond its comfort zone. So I have when we talk about Bangladesh, it has initiated the conversation. So now also the foreign nations have been very much good to the India, as they considered India to be a great source of the weapons, artilleries and etc. Right? So I hope these news headlines are very very clear to you. Whenever we talk about these currents or something, we can refer to the diseases, the reliefs, the UN peacekeeping activities and etc., which will be further boosting up the current affairs, right? Okay. Yes, guys. So anyone who has a doubt in these questions, in these news headlines, who need these news headlines to be covered up again, any of the news headline which you need to understand, any doubt in these particular news headlines? Anyone? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे रेफर कर सकते हैं. Yes. Absolutely true, मुन्ना राम जी. बिल्कुल मुन्ना राम जी आप सही कह रहे हैं. यस, कोई बात नहीं भरत. क्या बात है, चलो फिर कॉलोनी में ही चल जाना है ना. चलो, सो गाइस आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द सेशन. इसके अंदर आप लोग की करंट अफेयर्स की न्यूज कवर हुई है. From tomorrow onwards, I'll try to bring up 10 pointers in every current affairs news headline so that they will be helping you all in your upcoming examinations. So we will be taking more time for this session. I guess now from tomorrow, the session will be of 1 hour 15 minutes or 1 hour 20 minutes, which will be including your current affairs and your static GK. So we'll be awaiting your presence, guys, at 10 AM tomorrow on Samyak Civil Services and Samyak Civil Services in English. Till the time, please take care, keep learning, keep sharing. Also, if you have not downloaded the Samyak application right now, please download it right now, and see you all at 11:30 on Samyak IS app with the amazing topics of the history of Rajasthan. So thank you so much, guys. See you. Bye bye. Take care.